हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आपण माने भलर थिबे। तो आज आमे माने कोन करबा ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड किछि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करबा जाकी आपण मानकर एग्जाम रे हेल्प आसीबो। ठीक अछि, देखंतु आमे माने आज पार्ट 2 ओके जेतोटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हबो सेकुटी को आमे माने प्रैक्टिस करबा। जदि आपण माने एपरि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करबा को चाहउछंती ताले डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट मते करि परिबो। ओके ठीक अछि, चलंतु आज रो प्रथम क्वेश्चन देखिबा। आज रो प्रथम क्वेश्चन हेउछि देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ओके अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके देखो आमर करेक्ट यहाँ पचारि ठीक अच्छे। ए one the power of the municipalities are given in part IXA of the constitution and emergency provisions are given part X B triple I of the constitution and provision related to the amendment of the constitution are given in part X of the constitution। देखो आमर जिते गुड़िक सब जो म्युनिसिपालिटीज अच्छी ओके आम पार्ट IX ए रे आमर आसूचे ठीक अच्छे। ए इज वन इज करेक्ट एंड टू इज ऑल्सो करेक्ट इमरजेंसी एंड प्रोविजन्स ओके आमर पार्ट X B ट्रिपल I ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे आसूचे ठीक अच्छे। एंड थर्ड देखो आमर जो प्रोविजन रिलेटेड द अमेंडमेंट ओके जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे पार्ट X रे आसूचे ठीक अच्छे। देखो यार सठिक आंसर होउची ऑप्शन नंबर डी। ओके 1 and 2 and 3 आर करेक्ट। ओके देखो एनालिसिस करिबा। देखो आम जो पावर्स ऑफ म्युनिसिपालिटीज ओके आर गिवन पार्ट IXA okay and constitution of part IXA which added okay our 74th amendment act 1992 deals with municipalities and their powers and part X मतलब दो भी ट्रिपल आई आर्टिकल 352 360 of the constitution contain provision related to emergency situation ठीक अछि। हमर केतु प्रकार रो हमर इमरजेंसी सो आपण माने कमेंट करंतु ठीक अछि। केते प्रकार रो हमर इमरजेंसी अछि ठीक अछि। देखो आमर क्यों आर्टिकल आमर प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी लगी था तो आपण माने कमेंट करंतु। देखो पार्ट एंड XX ओके व्हिच कंसिस्टेंट आर्टिकल 368 ओके डील्स करता है आमर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होउची हु वाज द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर ओके देखो आमर जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ओके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओके आमर राजेंद्र प्रसाद का पूर्व किए थिले। देखो आमर ए श्री राजगोपालचारी बी डॉक्टर BR आंबेडकर सी TT कृष्णारामाचारी डी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। देखो आमर जो आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्तमान आपण माने कमेंट करंतु केते जण आमर मेंबर थिले ठीक अछि। सेकंड तो देखो आमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होतला प्रोविंशियल प्रेसिडेंट किए थिले आमर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ओके यार सठिक आंसर होउची ऑप्शन नंबर डी। ओके क्या पूर्व ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पूर्व ठीक अच्छे। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होउची हमरो देखंतु इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स। ए द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बी द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ सी फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ डी इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखंतु हमर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहले कोन या हमर ऑप्शन नंबर ए होउची करेक्ट। देखंतु द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ओके इट इज कॉल्ड एज ए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। चलो तो एनालिसिस देखिबा। एनालिसिस से देखंतु हमर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एनकम्पास द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ensuring that the individuals are treated fairly and impartiality and without bias। कौन प्रकार बायसनेस रखी न सरकार ठीक अच्छे। एंड यह आवश्यक करता है लीगल ओके आईनगत किसी गोटे प्रोसीजर जहाँ फॉलो करता है व्हेन डीलिंग करता है विथ इंडिविजुअल्स ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होउची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। ओके देखंतु हमरो चीफ पर्पज कहले कोन। ए इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव्स for the making of necessary law b it enables the creation of political offices and government c it define okay and a limit of the powers of government okay and d it secures social justice and social equality and social security। देखंतु हमर जो चीफ पर्पज कहले कोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री गोटे देशर चीफ पर्पज कोन। देखंतु हमर सठिक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर ए। ओके हमर दिस ओके देखंतु इट डिफाइन करता है लिमिट ऑफ द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट ओके लिमिट था सरकार जो पावर किसी लिमिट था केमिति। देखंतु हमर तो तीनोटी मुख्य स्ट्रक्चर अछि जाकि डिस्ट्रीब्यूट कराई सम पावर ओके बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो आपण माने कमेंट करंतु ओके हु इज मेकिंग फर्स्ट लेजिस्लेटिव व्हाट इज द वर्क ऑफ लेजिस्लेटिव कि लेजिस्लेटिव रो काम कोन एंड एग्जीक्यूटिव रो काम कोन एंड जुडिशियरी रो काम कोन आपण माने कमेंट रे लिखंतु ठीक अछि। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओके इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। देखंतु हमर दो क्वेश्चन एक्चुअली आसीथिला हमर यूपीएससी रे ओके ठीक अछि प्रीवियस ईयर आपण माने ए सब क्वेश्चन आंसर हमर पीवाई के ओटे ओके हमर यूपीएससी रो
क्वेश्चन आंसर पढ़ी ठीक है से क्वेश्चन आंसर को आम मैंने प्राक्ट करुचे ठीक है देखो देखिए आम नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 ओके आमर नेशनल फ्लैग ओके आमर देखो स्टेटमेंट 1 देछि वन ऑफ द नेशनल स्टैंडर्ड साइज ऑफ फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 mm to 400 mm. Statement 2, the ratio of the length to the height width of the flag shall be 3.2. देखो which of the following is correct पचास देखो आमर जो फ्लैग ओके तार लेंथ कहले लंबा एंड हाइट कहले एंड विड्थ ओके एंड विड्थ माने चौड़ा देखो आमर आमर 3.2 अटे ओके आमर लेंथ एज वेल एज आमर विड्थ बा हाइट ठीक है यार ऑप्शन देखो ए बोथ स्टेटमेंट ए 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट B only statement 1 is correct C only statement 2 is correct D statement 1 is correct incorrect but statement 2 is correct देखो यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी ओके मन रखियो देखो हमर जो फ्लैग होची हमर इंडियन नेशनल फ्लैग ओके यार लेंथ एंड हाइट लेंथ होची हमर 3 इंच मन रखते 3.2 माने 2 फुट ओके ठीक है हमर हाइट बा वेट होची 2 चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो आमर एनालिसिस करिया देखो आमर प्रथम होची आमर फ्लैग होची रेक्टेंगुलर ओके रेशियो होची देखो 3.2 ओके 3.2 एंड इट कंसिस्ट करता है 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स मन रखिए एंड सैफ्रॉन टॉप थाए टॉप रे हम सैफ्रॉन यार सिंबलाइज करता है करेज एंड सैक्रिफाइसेस ओके साहस एंड सैक्रिफाइसेस ठीक है एंड व्हाइट होची मिडिल थे हमर व्हाइट एंड या अशोक चक्र एंड नेवी ब्लू होटे हमर एंड 24 स्पोक थाए ठीक है एंड व्हील एंड रिप्रेजेंटिंग करते पीस एंड ट्रुथ व्हाइट इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रुथ एंड पीस ग्रीन होची बॉटम रहते सभा तले हमर ग्रीन थाए ठीक है सिंबलाइज करते ग्रोथ एंड फर्टिलिटी ओके ग्रोथ एंड फर्टिलिटी को हम ग्रीन इज सिंबलाइजिंग ठीक है चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे ओके हमरा कॉन्स्टिट्यूशन डे पछा ठीक है स्टेटमेंट 1 देखंतु द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स ओके देखो प्रथम तो हमारे 26 नवंबर प्रति वर्ष आम कौन कराए कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट कराए बट यह प्रमोट करते हैं बट आम सिटीजन्स मध्य ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू आम सिटीजन्स ठीक है स्टेटमेंट 2 देखो 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखो आम स्टेटमेंट 1 है करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट है देखो कारण कारण हूँ मन रखु आम स्टेटमेंट 1 है करेक्ट ओके बट 2 यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर 8 एनालिसिस देखिबा एनालिसिस देखंतु हमर जो देइची स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट देखो डे डेट सेलिब्रेटेड टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज 2 होची हम देखो ड्राफ्टिंग कमिटी वाज फॉर्मड ओके 29th अगस्त नॉट हमर 26 नवंबर मन रखछि सेति पई एटा इनकरेक्ट ठीक है बट हमर इंस्टेड एट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ओके ऑन 26 नवंबर 1949 हमर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कराइतला को दिन 26 नवंबर 1949 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 the function of provincial government were divided into reserved and transferred okay subject which of the following were treated as a reserved subject ओके आपण माने कहतु ओके हमर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट क्यों एक्ट 1919 अनुसार ठीक है हमर जो फंक्शनल कार्य गुडी कार प्रोविंशियल एज वेल एज हमर गवर्नमेंट ठीक है डिवाइडेड होइतला दुई प्रकार कार्य दातला गोटे रिजर्व्ड एज वेल एज गोटे ट्रांसफर्ड ठीक है ये जो रिजर्व्ड थिबा केतोटी सब्जेक्ट ओके क्यों प्रांत रे क्यों क्या प्रदान कराइतला एवं ट्रांसफर्ड अंडर आसीथा जेतोटी सब्जेक्ट सब क्या ट्रांसफर कराइतला से सब गुडी कोन आप माने कमेंट करंतु देखंतु प्रथम देजी रिजर्व्ड ओके रिजर्व्ड सब्जेक्ट के गुडी को थिला प्रथम ते देखंतु हमर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सी लैंड रेवेन्यू डी पुलिस देखंतु हमर ए जो लैंड रेवेन्यू वाला पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इसको रिजर्व्ड सब्जेक्ट रे आसोची या रिजर्व्ड सब्जेक्ट का अंडर रहइबो हमर देखंतु हमर ब्रिटिश अंडर रहइबो ठीक अछि बट रिजर्व्ड सब्जेक्ट बट ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट सम सब्जेक्ट जे गुडी एजुकेशन सेक्टर हैला ए सब कोन होची ना हमर इंडियन मिशनरी माने इंडियन हमर रेवोल्यूशनरी ओके दे कैन हमर सर्व द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एनालिसिस करबा चलंतु देखंतु हमर द रिजर्व्ड सब्जेक्ट सब के गुडी को लैंड एंड ऑर्डर हैला जस्टिस एंड फाइनेंस एंड इरिगेशन एंड लैंड रेवेन्यू एंड प्रेस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जाकी हमर इंडियन रेवोल्यूशनरी मानकू दिया जाइतला प्रदान कराइतला देखंतु एजुकेशन पब्लिक हेल्थ एग्रीकल्चर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ठीक है चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स ओके व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ओके a representative government of a nation with a federal structure b a government whose okay head enjoy nominal powers and c a government whose head enjoys
real powers enjoys, okay, and D, the government limited by the terms of the constitution. देखो ଆମର constitutional government କହିଲେ କଣ କଣ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଟେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ constitutional government କହିଲେ representative government of a nation with federal structure. Now B, a government whose head enjoys a nominal power, a government whose head enjoys a real power, a government limited by the terms of the constitution. I think option number D is correct. Okay, why? Because ଗୋଟେ ସରକାର okay limited ଥାଏ constitutional government କହିଲେ ମାନେ means ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ government limited by the terms of the constitution। ଦେଖିବା analysis ସଠିକ୍ आंसर है D। देखନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ constitutional government କହିଲେ analysis was prevent करता the abuse power, ensure करता equality before the law, and protect करता है individual freedoms, okay, and promote करता है stability and order in the society, provide करता है a mechanism to resolve disputes through legal means। Okay, next question देखिबा। next question ହେଉଛି what was the exact constitutional status of India on 26 January 1950? A, democratic republic; B, a sovereign democratic republic; C, a sovereign secular democratic republic; D, a sovereign socialist and secular democratic republic। देखंतु हमर सटीक आंसर हेउची ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखो हमर जो व्हाट वाज द एक्जेक्ट थिला हमर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। एक्जेक्टली हमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पे बोले सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पर जा किया कोनला सेकुलर भी हला, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ 26 एंड जनवरी 1950 एक्जेक्ट पर चले तो आपण माने एठा ही ठीक करियो, ठीक है। ये सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ओके, चार्टर एक्ट कोन पे आसीतला आपण माने कमेंट करंतु। चलंतु चार्टर एक्ट 1813 कोन उद्देश्य थिला, ऑब्जेक्टिव कोन थिला से विषय पढियो, ठीक है। देखंतु हमरो A1 is it ended the trade monopoly of the East India Company in India except for the trade in tea and trade with China. Okay, and 2, it asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the company. Now 3, the revenue of India were now controlled by the British Parliament. देखो यार सटीक आंसर हेउची हमरो 1 and 2। ओके, इज करेक्ट। व्हाई? चार्टर एक्ट जो 1813 हमरो कोन पय होइतिला प्रथम देखंतु तो या एंड करतला ट्रेड मोनोपोली। ओके, कार ईस्ट इंडिया कंपनी मान बदर का सहित ना चाइना सहित, ठीक अछि। सेकंड इज हमरा असर्टेड करतला सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन एंड ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। ओके, देखंतु चार्टर एक्ट रे हमरो क्रिश्चियन मिशनरी मानकू ओके किछि ताकर एजुकेशन को एक्सपांड करिपा पई तो से मानकू किछि प्रकार सहायता कराइथिला। बट एजुकेशन से एतक मात्रा मध्ये भी इन्वेस्टमेंट करा जाय नथिला। ओके, जहा कि या बहुत असुविधा होइथिला। ओके, भविष्य रे चलो तू एनालिसिस करतो अभी देखो तो एंडेड करता ट्रेड मोनोपोली एंड इन इंडिया कंपनी इन इंडेक्स एक्सेप्ट ऑफ ट्रेड इन टी एंड ट्रेड चाइना सोवरेनिटी ओके एक्सेप्टेड करता, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग led to the introduction of English education in India। ओके, तो देखो तो हमर जो इंग्लिश एजुकेशन भी मध्ये चार्टर एक्ट रे आसोची। ओके, चार्टर एक्ट समय रे ही हमर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कोन होतिला प्रणीत कराइतला, ठीक है। देखिबा ताका विषय रे करेक्ट पचार, ठीक है। ए 1 इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 2 जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1923 and 3 ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट। ओके, देखो यार हमर ऑप्शन नंबर डी हेउची करेक्ट। इंग्लिश एजुकेशन कहले कोन चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1923, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। ओके, चलो तो ठीक एनालिसिस देखिबा। एनालिसिस देखंतु हमर कोन होइतला ना हमर जो ओरिएंटलिस्ट ओके ओरिएंटल लर्निंग ओके ब्रिटिश इनिशियली डिबेटेड थिले क्या क्या मतलब किपरि भाबरे से माने शिक्षार स्तर को बा शिक्षा प्रचलन करिवे भारत रे। ओके, आज वेस्टर्न एजुकेशन या तांकर हमर जो पारंपरिक शिक्षा थिला से पारंपरिक शिक्षा से मानको प्रदान करथा। बट डिबेट होइतिला। ओके, गोटे डिबेट होइतिला। डिबेट मध्ये से माने निष्पत्ति नेले जे कोन ले पढिया देखंतु ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम और वेस्टर्न एजुकेशन। ओके, दुई जनक मध्ये क्यों एजुकेशन ता हमर शिक्षा रे व्यवहार करे जे सेति से माने डिबेट करथिले एंड ओरिएंटलिस्ट आर्ग्यू करथिले फॉर प्रिजर्विंग इंडियास रिच एंड कल्चरल हेरिटेज। हमर ओरिएंटलिस्ट जो थिले जो माने हमर सांप्रदायिक था थिले, ठीक है। से माने कोन चाहुथिले कि हमर भारतर संस्कृति एंड भारतर ऐतिह्य को प्रिजर्व संरक्षण रखा से कौन करते ना ओरिएंटलिस्ट रे मातृभाषा माध्यम शिक्षार प्रचार प्रसार बा शिक्षार माध्यम को चाहूले। बट आमर एंग्लिसिस्ट कौन कहते लाइक मैक्ले एम्फासाइज करते सुपरियरिटी ऑफ वेस्टर्न नॉलेज एंड इंग्लिश। ओके, एंड मैक्ले किंतु यह विपरीत थे। से चाहूले कि आमर वेस्टर्न एजुकेशन बा नॉलेज इंग्लिश को किपरि भाबरे कौन एक्सपांड करा जिवो इन इंडिया। ओके, बट मैक्ले मिनिट became a turning point and leading to the adaptation of English as the medium of instruction in higher education। but मैक्ले एजुकेशन एक्चुअली से अडॉप्ट नेला। ओके, ता मैक्ले को द्वारा ही
इंग्लिश कौन है एज अ मीडियम है हायर एजुकेशन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन होची इन द फेडरेशन एस्टाब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू ओके ए फेडरल लेजिस्लेचर बी गवर्नर जनरल सी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर डी प्रोविंशियल गवर्नर्स देखो हम देछि इन द फेडरेशन ऑफ एस्टाब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू ओके आमर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ओके रेसिडुअरी पावर्स कहले कौन थिला रेसिडुअरी पावर कहले गवर्नर ऑफ जनरल ओके आमर जतक सब रेसिडुअरी पावर थिला से सब को आमर गवर्नर जनरल को कौन होता गिवन दिया जायतिला ठीक है फेडरल एस्टाब्लिश करा जायतिला देखंतु ऑप्शन देखंतु आमर देखंतु जो रेसिडुअरी पावर्स वर असाइन्ड टू द गवर्नर जनरल ओके एनी मैटर नॉट एनुमरेटेड दिस लिस्ट ओके वाज टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नर जनरल इन हिज डिस्क्रिप्शन ठीक है बट देखंतु फेडरल लिस्ट ओके फेडरलिस्ट कहली कौन ना आम विभिन्न प्रकार जो कंट्रोल थिला सेंट्रल एजेंसी लाइक डिफेंस फॉरेन अफेयर्स ए गुडी सब आम फेडरल लिस्ट रे आसुची प्रोविंशियल लिस्ट कोन आसुची देखंतु कंट्रोल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पुलिस एंड एजुकेशन ओके कंकरेंट लिस्ट रे हमर लाइक क्रिमिनल लॉस ए सब कोन आसुची हमर कंकरेंट लिस्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड क्लियरली डिफाइंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अ प्रिंसिपल of election in India introduced clearly defined. Okay, what Government of India Act of Principle of Election in India introduced clearly defined. Okay, देखो A separation of powers between judiciary and the legislature, B the jurisdiction of central and provincial governments, C the powers of Secretary of State for India and the Viceroy, D none of the above. सठिक आंसर है देखो ऑप्शन नंबर बी ओके द jurisdiction of central and provincial government ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज कंसीडर्ड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओके निम्नलिखित मानक मध्यरु ओके क्यों स्टेप टुवर्ड्स ओके डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओके A Government of India Act 1919, B Government of India Act 1935, C Indian Independence Act 1947, D Charter Act 1833. देखंतु यार सटीक आंसर होउची ऑप्शन नंबर डी ओके चार्टर एक्ट 1833 ओके वाज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप इन टुवर्ड्स द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यार लक्ष्य थिला सेंट्रलाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन and creating a uniform system of law and initiated reforms of in the governance of India. It marked the beginning of the constitutional reforms in India. Okay. Next question देखिए next question है which of the following act provided okay for the establishment of the federal court in India. देखो आमर क्यों एक्ट ओके फेडरल कोर्ट इन इंडिया एक्ट प्रोवाइडेड फेडरल कोर्ट कहले कौन आमर जो देखो आमर जो सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश्ड होई नथिला ता पूर्व हमर फेडरल कोर्ट थिला ओके ठीक अछि से फेडरल एक्ट केबे प्रोवाइड करता से कथा कहि ठीक है देखो ए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 देखो यार सठिक आंसर हेउची ऑप्शन नंबर हमर ओके ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ओके इज ऑफन रिगार्डेड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्ट प्रायर टू इंडिपेंडेंस. It introduced a federal structure with a central government and a provincial legislature. And it also established the Federal Court of India, okay, and which later to become the Supreme Court of India in 1950. ठीक है जी next question देखना. Next question है जी the Motilal Nehru, okay, 1928 was significant because it okay what is the biggest it a proposed dominion status for India, B demanded complete independence from British rule, C suggested the framework for a federal structure in India, D introduced the idea of the universal adult suffrage. Okay, Motilal Nehru report 1928 was significant. Okay, because a proposed dominion status for India, yeah, demanded complete independence from British rule, yeah, suggest the framework for a federal structure in India, yeah, introduced the idea of universal adult suffrage. यार सटीक आंसर है देखो ऑप्शन नंबर सी ओके सजेस्ट द फ्रेमवर्क फॉर फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया ओके ठीक है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ओके 1928 proposed the federal structure for India which was the precursor of the federal features found in the Government of India Act 1935. It also made recommendation for fundamental rights, a bicameral legislature and a responsible government at the center. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following was the primary objective of the Indian Independence Act 1947. प्राथमिक ऑब्जेक्टिव कौन होते ओके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ओके A to establish a parliamentary system
of a government to be to divide British India into two independent dominance and India and Pakistan. C to establish a republic from of a government. D to grant India statehood and self rule. देखो तो हमारा जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ ଓକେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଡିଭାଇଡ୍ ଓକେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଡୋମିନିଅନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ରିଗାର୍ଡିଂ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ 1947 ଥ୍ରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର which body was responsible for drafting the constitution of India okay A Indian National Congress B Government of India Act 1935 C Constituent Assembly of India D Round Table Conference so drafting of the Constitution of India which body was responsible क्यों बडी आमर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों बडी आपण कमेंट कर परिबे कि देखो यार सटीक आंसर हेउची ऑप्शन नंबर सी ओके आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक है यह ड्राफ्ट कराइथिला हमर 1946 एंड ए कंसिस्ट करता इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट डॉक्टर बी आर अंबेडकर हमर वाइडली रिगार्डेड एज द प्रिंसली architect of the Indian Constitution. Next question देखिबा next question है which of the following principle was not included in the original jurisdiction of India. Okay निम्नलिखित मानक मध्यरु okay original jurisdiction sorry original constitution ने क्योंकि को ऐड करा जाय नथिला ए fundamental rights B directive principle of state policy C fundamental duties D independent judiciary देखो यार सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओके fundamental duties हमरो आमर कौन कराई आमर आड करा जाय नथिला ओके ठीक अछि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी देखो प्रथम देखो आमर फंडामेंटल ड्यूटीज आड होइतिला लेटर बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 they were not a part of the original constitution of India but it was not a part of the original constitution of India what our fundamental duties is not a part of the original constitution of India but which is primarily included fundamental rights, directive principle of state policy, and the establishment of independent judiciary. Okay, next question देखिबा. Next question है which case upheld the principle that basic structure of the constitution cannot be amended. Okay, cannot be amended. क्यों case okay जहाँ द्वारा basic structure of the constitution add करा जाय नथिला amended होई नथिला. ओके कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड आमे क्यों बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंडेड करि परिबा नाही बोली ये जो केस ओके क्या मध्य आमर होता ए केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड बी मिनर्वा मिल्स एंड यूनियन ऑफ इंडिया सी गोलोकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब डी बेरुवारी यूनियन केस देखो यार सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती केस 1973 इंट्रोड्यूस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लिमिटिंग पार्लियामेंट्स पावर ओके एंड अमेंडेड फंडामेंटल फीचर्स लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट ठीक है आई होप आपण मानकू ए क्वेश्चन गुडी को मोस्टली प्रैक्टिस रे आपण मानकर हेल्प आसीथो एवं एथला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आई होप आपण मानकू भलो लागि तो एपरि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर यदि प्रैक्टिस करबे को चाहू तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट मते करि